In previous class, we started second unit of this course, and we talked about introduction to semiconductor in general, and we talked about its classification, intrinsic and extrinsic semiconductor. So today we will start our discussion by taking some questions, some very simple questions, what we learned yesterday, and then going further to discuss all the other topics. So let me put some questions to you, and it will make me realize that you are also understanding. So this is the first question, where it asks, intrinsic semiconductors are those, option A, which are made of semiconductor material in its purest form, option B, which have zero energy band gap, option C, which have more electrons than holes, and 4, which are available locally. So which one will be the correct answer? So material in its purest form. Yes, Option A, sir. Right, yeah. Option A, sir. So yeah, most of the people are knowing this, and this is what we learned yesterday, and I hope you have also learned this introductory part in your previous classes as well. So intrinsic semiconductors are those semiconductors which are pure semiconductors. We don't do doping for them. Then this is the second question. Intrinsic semiconductors at room temperature will have this species are available for conduction. So for intrinsic semiconductor, conduction, what are the things which are responsible for conduction? So there is option A, electron, B, holes, C, both electrons and holes, D, none of above. Whether it is intrinsic or extrinsic, in case of semiconductors, the charge carriers which are responsible for conductions are both electrons and holes. For extrinsic semiconductor, there will be some majority, some minority, but always there will be holes and electrons. So if there is semiconductor, both electrons and holes are responsible for conduction. So option C is the correct answer for this question. So let's go to the next question. A pure semiconductor behaves like an insulator at 0 Kelvin because there is no combination of electrons with holes. There is no recombination of electrons with holes. Option B, drift velocity of free electron is very small. Free electrons are not available for current conduction. Energy possessed by electron at that low temperature is almost zero. Which one is the correct answer? So free electrons are not available for the current conductions. Yes, absolutely correct. So since in pure semiconductor, it behaves as an insulator at 0 Kelvin because all electrons are in valence band. There is no free electrons available in conduction band for conduction. So third option is the correct answer for this question. So let's go to the next question. Which of the following is a semiconductor? So we are discussing Option D. Yes. Option D is the correct answer. Gallium arsenide is a semiconductor, while these are not semiconductors. Arsenic and phosphorus is a pentavalent. If you remember the direct bandgap semiconductor, it is useful for optical devices we made using semiconductors. Okay, so get to the next question. The energy gap is much more in silicon than in germanium. So if you know energy gap, and it says that in case of silicon it is higher as compared to germanium, what could be the reason for that? So there are 4 options. It has less number of electrons, it has high atomic mass number, its crystal has much stronger bond called ionic bonds, its valence electrons are more tightly bound to the parent nuclei. What could be the reason for this energy gap? Why energy gap is higher? So this question is
bit standard question as per your scope of the course. So anyone want to try which will be the answer? Sir, it has a less number of electrons. No, this is not correct because germanium basically it may have less number of electrons, but that is not the reason for its energy gap. So indirectly, the correct answer for this question is its valence electrons are more tightly bound to the parent nuclei. So that is the reason it has a more energy band gap. Okay, so answer D is the correct answer for this question. Means many time the question कोई question कितना मुश्किल है कितना आसान है, it depends upon the what are the options are there. अगर कुछ बहुत absurd options दिए रहते तो वहाँ पे सही आंसर करेक्ट करना काफी आसान होता है. And when you give answers which looks like correct, then it becomes complicated. So this is what hardness of question should be judged by the type of options given to the question. So all options look quite reasonable. So that is why this question is bit, I said this is a bit standard question. Okay, so this is a very simple question. A semiconductor in its purest form is called like our first question and this question. So insulator. Sir, option C. C. Option Sir, C. option C. Semiconductor, yeah. The semiconductor in purest form is called intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors are those when we do doping and somebody says insulator. It is not insulator. In purest form, at 0 Kelvin, it behaves like an insulator, but it is not an insulator. For a particular set of condition, it may behave as an insulator, so we will not call it an insulator. The best option for this is in purest form semiconductor we call intrinsic semiconductor. Okay, so let's go further. This is question number 7. A p-type semiconductor results when? So trivalent impurities. Sir, B. Yes. You're absolutely correct. Option B is correct. A trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor, then we have p-type semiconductor. What happens? Trivalent impurity is there. It tries to make covalent bond with nearby semiconductor atoms, and there is one vacancy because all other atoms have 4 electron valence band and valence in outermost orbit, and this has 3. So there is one. If they get 1 electron, they may make complete bonding. So there is a hole, and since hole are there because of doping, that is why it is called p-type semiconductor. So we have discussed this in previous class as well. Question number 8. An intrinsic semiconductor at absolute 0 temperature behaves as an Insulator. behaves as an insulator. Yes, the same question is coming in different form. This is a good question. We have discussed this. A semiconductor has temperature coefficient of resistance, so negative temperature coefficient of resistance. We have discussed this. मतलब ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. So this is why it is called this. Option C is correct. A semiconductor has negative temperature coefficient of resistance. लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ना. टेम्परेचर बढ़ाते नहीं, हैं, बढ़ती है सेमीकंडक्टर में बढ़ती है. सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो बैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, they will get enough energy to jump into conduction band and then will increase its conductivity. In case of conductors, it is opposite. That is, we will discuss this in this unit, drift and diffusion process, then you will better understand why in case of conductors, this conductivity reduces increasing temperature. Although I tried to explain you in previous classes,
in case of conductor, how it happened, but in semiconductor, I think you should be sure that when we increase temperature, there is some electrons from valence band get enough energy to go in conduction band, which create electron hole pair, and that is responsible for conduction. So that way we say इसका कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है. अभी हमने देखा ना प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसका कंडक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कुछ कंडक्टिविटी आता है. सेमीकंडक्टर के केस में हमेशा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, एंड सिंस कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा. Okay, so I think everybody understand what will be the answer of this question. This is option C. This is question number 10. A doped semiconductor is also known as Extrinsic Sir, option semiconductor. B. option B, yes. So this is known as extrinsic semiconductor. Doping means adding impurity in the semiconductor to increase its conductivity, basically. Okay, this is a semiconductor. In semiconductor, the forbidden energy gap lies just below the conduction band, just above the conduction band, either above or below the conduction, between the valence band and conduction band. Which will be the correct So answer? between the valence band and D. conduction band. D. Yes. Between the Option D is correct. You all are absolutely right. In semiconductor, forbidden energy gap lies between the valence band and conduction band. We have seen this picture many and many times. Okay, so let's go to the next question. Which of the following cannot exist outside a semiconductor? Semiconductor के बाहर ये exist नहीं कर सकता. ऐसा क्या है? This is hole, electron, both hole and electron, and the none of the above. So it is a good question. so hole. Yes, you are absolutely correct. Hole cannot exist outside semiconductor. Electron is a particle kind of thing. It can exist. There can be free electron, but hole is vacancy of electron. So it has to be had inside the semiconductor. So it is not a particle basically. This question it tells something that holes are not a particle basically. Holes are vacancy for electron. Okay, so let's go to the next question. In N-type semiconductor, the positive of the Fermi level. This is not positive, it should be position of the Fermi level, and this we are going to discuss in coming classes because as of now we haven't talked about the Fermi level in semiconductor. So the question is in N-type semiconductor. You know, in N-type semiconductor, majority charge carriers are electrons. So it says in general, what should be? We said in general semiconductor, we say that energy gap. अभी हम लोगों ने बात किया कि energy gap is gap between conduction band and valence band. तो होता क्या है? Fermi level उसके बीच में lie करता है in case of pure semiconductor. But in N-type semiconductor and P-type semiconductor, it changes its position because of carrier concentration. The Fermi level is a mathematical concept actually, and इसका position एक तरह से जो हम लोगों ने Fermi level define किया कि 50% probability है electron के occupy होने का. So from that the concept comes in. और इसमें N-type semiconductor और P-type semiconductor में Fermi level center में ना होके एक में पी टाइप में एक में कंडक्शन बैंड के पास होता है, एक में वैलेंस बैंड के पास होता है. So this question is out of our discussion as of now. So we will go to this question later on. And this is the same question. As the temperature of semiconductor increases, its conductivity increases. Conductivity increases. Yes. And this is the last question for on this topic. Which of the following doping element would not be suitable for converting intrinsic semiconductor? So it says कौन सा ठीक नहीं होगा
The phosphorus is in pentavalent, antimony is pentavalent, arsenic is pentavalent. So I think indium is not the correct option. Okay, so we quickly try to revise things and try to answer some MCQ type of question. And now we will be moving further to understand some conceptual on conceptual ground to better understand semiconductors. Okay. So we have been talking about carriers, charge carriers in semiconductor. These are electrons and holes. So let us try to slowly understand its carrier, nature of these carriers and how they affect all the properties of semiconductor. So I hope this thing is visible on your screen and I will be slowly reading and explaining to you what is written here. So these notes are quite self-explanatory and in proper way it is there. You can try to understand it later on also, and as of now I will be explaining. Okay, so carriers are the object of interest when we are dealing with semiconductors. If there is a lack of carrier, there is little or no current flow. Means carriers are responsible for the current conduction, so we need, if there are a lot of carriers, then we will have a lot of currents. If carriers are present, either an electron in the conduction band or a hole in valence band, negative or positive current respectively will result. A semiconductor is doped to increase the concentration of one or both of carrier to create a larger current flow. If donors are added, making the electrons the majority carrier, the semiconductor is said to be N-type, and for P-type semiconductor, acceptors are added to make holes the majority carrier. So we have discussed this thing previously, but it in a summary form कि semiconductor के लिए carriers important हैं और जो charge carriers हैं इन पे ही depend करता है कि semiconductor का conductivity कैसे होगा. So generally, दो तरह के semiconductors, दो तरह के charge carriers हैं, electrons and holes, and when we get p-type, when we get n-type, we discuss this. So these are some basic definitions. कि electron क्या है, hole क्या है, dopant क्या है, carrier are those which can transport or convey charge carrying entity which can carry a charge. So current is basically movement of charges. So if charge moves, it produces current. So in case of, in general, for metals, electrons are the charge carriers. Generally, हम लोग जो भी देखते हैं, जो current हमारे वहाँ आता है, so all their metals are used for transporting this. So in that case, electrons are the charge carriers. But in case of semiconductor, there are two type of charge carriers: electrons and holes. Electrons are negatively charged, holes are positively charged. So electron define कर रहे हैं a subatomic particle in the lepton family having rest mass this in unit negative charge, this negative charge. Hole क्या है? Hole is not a particle actually. We have discussed this question before. In a question we discussed this thing. The hole is not a particle. It is a vacant electron energy state that is manifest as a charge defect in a crystalline solid. So this defect means जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो सकता था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है. So for that it behaves as a positive charge carrier with charge magnitude equal to that of electrons. डोपेंट क्या होता है? डोपेंट मतलब जिससे हम डोपिंग करते हैं. तो जो भी जैसे फास्फोरस, एंटीमनी या जो भी हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट impurities, they are called dopant. So this is a basic definition, but let us go further to try to understand how this thing works in a better way. So let me read it and then keep on explaining things. It is fairly simple to visualize an electron jumping to conduction band and moving in every direction. Since we know it is a physical object,
However, visualizing a hole is something new to almost, if not everyone in the class. कह रहे हैं कि ये विजुअलाइज करना काफी आसान है कि इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल मींस फ्रॉम वैलेंस बैंड इट गोज टू कंडक्शन बैंड बट होल के बारे में थोड़ा सोचना शुरू में मुश्किल होता है नए जब हम नई चीजें पढ़ रहे हैं तो वी मे थिंक होल एज एन पार्टिकल बट इज नॉट अ पार्टिकल सिंस होल इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन वे टू लुक इट बाय पिक्चरिंग a soft ring. एक एग्जांपल से समझने का कोशिश कर रहे हैं when it is being poured bubbles rise from every bottom of the glass to the top and are released. जैसे कोई हम कोल्ड ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक बोल रहे हैं कोई कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज हम कोई ग्लास में जब डालते हैं तो कुछ बबल्स बॉटम से निकल के ऊपर तक आते हैं as they rise to the top the liquids taking their place at the bottom we can picture the glass to be valence band and the atmosphere being as a conduction band, the bubbles are holes and liquid is electrons. ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं जो bubbles है they are actually they come out and they disappear. So since electrons like to be the lowest energy state possible, they take the place of hole in the lowest state, making it rise to higher state. और सिमिलरली ऐसे सोचे हम कि जब हम लोग वाटर बॉयल करते या कुछ करते तो नए नए बबल्स बनते हैं दे गोज आउट सो मींस दैट थिंग इज ऐसे एग्जांपल से उसको समझने का कोशिश करें कि होल्स आर नॉट ए रियल पार्टिकल बट दे आर जस्ट प्लेस देयर इज स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा बिकॉज ऑफ सम एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैज गॉन आउट ऑफ दैट स्टेट इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हम होल्स खुद ही क्रिएट करते हैं वहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है सो फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज कि होल और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पे भी बात किया था इसी को हम लोग इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं Then let's come to this para. The number of carriers in an intrinsic semiconductor is one of the identifiable properties of the material. Okay. कितना कैरियर होंगे नंबर कैरियर वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं So these are denoted as n. हम नंबर ऑफ कैरियर को हम n से डिनोट करते हैं फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्मॉल n मतलब हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन की जब आगे बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि टू से दैट इतने इलेक्ट्रॉन हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर में तो हम उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी रिप्रेजेंट होल्स बाय स्मॉल p and p for the number of holes per cubic centimeter. In an intrinsic semiconductor, under equilibrium condition, these two quantities are equal. So in general, what happens in case of intrinsic semiconductor, the electrons are equal to holes because there are everything is bonding and there is no vacancy, there is no free electron in case of intrinsic semiconductor at 0 Kelvin. And when we give some temperature, electrons jump from valence band to conduction band. And thus it creates an electron hole pair. So in case of intrinsic semiconductor, number of electrons will be equal to number of holes present in the semiconductor. So that is what it is saying that in the intrinsic semiconductor and under equilibrium conditions, these two quantities are equal since they occur in pair. If bond is broken, creating an electron, it also creates a hole in the process. That is what I am saying, if electron gets free, it creates a hole. However, this does not make for an efficient semiconductor. And again, the same thing, कि जो intrinsic semiconductor हैं वो बहुत यूजफुल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उनका कंडक्टिविटी काफी कम है और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि हम बहुत इसको यूज में ले सके That is why we do doping and extrinsic semiconductor is just a concept. Extrinsic semiconductors are mainly used in industry.
So charge created by an free electron will be neutralized by a charge created by an hole. Therefore, dopants are added to the semiconductor material to increase either electrons or holes concentration in semiconductor. So this is also a general thing. In this slide, we try to learn that electrons and holes are very different type of concept. It's not similar kind of particles. Electron is a real particle, but hole is not a particle. It is a vacancy of an electron, where electron can take a position. And then we talked about that semiconductors केस में जो कैरियर का concentration है, it defines a lot of things. So we are denoting electron per cubic centimeter by small n and hole per cubic centimeter by small p. And then we said that in case of intrinsic semiconductor, number of electrons are equal to a number of holes. But when we do doping, when we make extrinsic semiconductor, so it depending upon what is n type or p type, number of electrons will be more or less in case of n type or p type. So this is what we discuss in this slide. So let's go further. This is the concept we learned in previous unit, density of state. Here again we are putting it in summarized form, and here it is written in two types. When E is less than EV, when E is greater than EC. So again, density of state is again always proportional to e to the power half, but here there is energy of balance band, energy of conduction band, and we said we try to calculate for electrons, then होल के लिए ऐसे सिमिलरली कर लेंगे, ऐसे वहां पे मैंने डेरिवेशन पे बताया था. यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको समझने का कोशिश करें कंसेप्ट को. So derivation we have done. So this is a mathematical thing. We can do similar derivation for holes, but we are not doing it again. We will take this concept to understand this density of state. इसका मतलब क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. So number of allowed state in the energy bands grow as the number of atoms in solid increases. Okay. When the number becomes very large, the energy states are so close that they blend and become a continuous band of allowed state. As a band structure बनता है. So these bands become the valence band and the conduction band of the crystal. Electrons can only be found in these bands. No other energies are allowed. जो band है, band के अलावा जो होता है वो forbidden energy होता है. तो ये चीज हम लोग समझते ही है. Then it says कि हमने एक फॉर्मूला बनाया. You use GCE and GBE to determine the density of state at energies close to edge of these bands. मतलब density of state जो एनर्जी बैंड हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, उनके पास क्या इनकी वैल्यूज होगी, ये हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज फॉर बैलेंस बैंड. जीवीई मतलब बैलेंस बैंड के पास बता रहा है कि ईवी इज लेस देन ईवी, मतलब बैलेंस बैंड के अंदर का बात है. ये बैलेंस बैंड के अंदर क्या होगा, दिस विल बी proportional to under root E. So EV minus E, this thing will be like that. And for conduction band, the density of state will be this. So this is E is greater than EC, मतलब EC के ऊपर बीच में तो forbidden band है, वहां पे तो कोई एनर्जी स्टेट्स अलाउड नहीं है, तो वहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट तो जीरो हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब कितना अलाउड एनर्जी स्टेट्स है जो हम बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में देखते हैं. देयर आर मेनी स्टेट्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई, एंड इन बैलेंस बैंड में होल्स आर देयर. तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक कंसेप्ट आया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट ये कहता है कि कुछ जो अलाउड स्टेट्स हैं उसको हम कुछ वॉल्यूम के हिसाब से बताएंगे. सो दिस बल्क सेमीकंडक्टर के लिए हमने पहले ही बात किया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई. सो दिस थिंग इज कमिंग हियर, दिस m स्टार p मतलब
effective mass of hole. This is GVE, means density of state in balance band. Balance band में क्या होता है? Holes होते हैं. So this is effective mass of hole. 2m star and P EV minus E. EV is the energy of the top of the valence band, and E is the energy at the value we are looking for density of state. And then this is for conduction band. This formula we have derived this formula in previous discussion when we were doing that derivation for density of state. So don't worry about this, how we are getting this formula as of now. We can take this formula because we have already derived a general expression for density of state. Then we talked about Fermi function. Fermi function क्या बताता है? Probability बताता है कि कोई state है वो occupied होगा कि नहीं occupied होगा. Okay. So you see, probability of occupation is given by this. Probability of vacancy is given by this. Vacancy क्या होता है? Hole होता है. तो अगर हम बोलें कि probability of energy state is empty means probability that this state is in hole. So for hole this will be the probability, and for electron this will be the probability. Okay. Okay. So again this Fermi function at Fermi energy is half and its value is 0 to 1. All these things we are just revising. एंड फिर हम लोगों ने एक छोटा सा समझाने का कोशिश किया था जो फर्मी लेवल होता है वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है और जब ये बैलेंस जब ये एन टाइप और पी टाइप होता है तो फर्मी लेवल गेट शिफ्टेड. हम इसको समझेंगे क्यों शिफ्ट होता है. और देन वी टॉक्ड अबाउट दिस स्लाइड वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास कि कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो कंडक्शन बैंड है बैलेंस बैंड है वहाँ पे कैरियर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं. कुछ एनर्जी स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं, कुछ एनर्जी स्टेट वैकेंट हैं. ऐसे ही कंडक्शन बैंड में बहुत सारे स्टेट्स हैं. कुछ एनर्जी स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं, कुछ एनर्जी स्टेट्स वैकेंट हैं. जो वैकेंट और इसका हमको कैलकुलेशन करना है तो ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि if we multiply density of state to the Fermi function, what we get carrier concentration. मतलब इतनी स्टेट की डेंसिटी है और इतनी स्टेट्स उसमें ऑक्युपाई हो सकती, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, मतलब कितने कैरियर्स हैं. You get an idea about that. This is what the thing we discussed in previous class. Now we are moving further to discuss few things. You see, this is equilibrium carrier concentration. तो हम लोगों ने ऐसे बात किया था कैरियर कंसंट्रेशन. इलेक्ट्रॉन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, होल को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये वही कंसेप्ट जो हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है. तो कंसंट्रेशन के लिए ये डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड दिस इज फर्मी फंक्शन. इसको हम एनर्जी ईसी मतलब क्या है, बॉटम ऑफ द बैलेंस कंडक्शन बैंड टू इन्फिनिटी. ऊपर की कितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स को लेके हम वो कर दें, इंटीग्रेट कर दें. सो यू गेट दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन. एंड सिमिलरली दिस फॉर्मूला फॉर होल कंसंट्रेशन. यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी मतलब बैलेंस बैंड की जो टॉप मोस्ट एनर्जी है दिस इज ईवी, एंड इसके नीचे जितनी भी स्टेट्स हैं वो हम इसमें कंसीडर कर लेंगे. एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ दिस इज फर्मी फंक्शन 1 माइनस एफई मीन्स कि कोई स्टेट वैकेंट है मतलब वहां पे होल है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन. फिर इसके बाद कुछ इसका डेरिवेशन करते हैं, उससे हम लोग ये बताते हैं कि if electron concentration and hole concentration is given by
दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अब ये चीज हम लोग आगे ड्राइव करेंगे, ये फॉर्मूला को लेकर भी कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। Ni इज द कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दिस इज NO/PO, ये इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में या नॉर्मली हमको ये फॉर्मूला ये वैलिड रहता है, लेकिन ये फार्मूला के बाद हम लोग फार्मूला बाद में डराइव करेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस फार्मूला एंड डेरिवेशन, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम आगे का बात करेंगे। ये सारे कुछ फार्मूलाज हैं जिनको रखो, इन पे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनके बारे में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगा। अभी कंसेप्ट की तरह समझने का कोशिश करो। लेट्स लीव दिस स्लाइड एज ऑफ नाउ एंड ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, एक चीज देखो, ये है चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी ये होता है कि जो भी हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पे वो बना सारे एटम्स है, सारे एटम्स हैं। होता क्या है, जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, टॉप मोस्ट बैंड है, वहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड and holes and electrons are created in the process। तो चार्ज मतलब कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो जो ओवरऑल मटेरियल है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। So this is what it is written, charge neutrality occurs when all charge in volume adds to zero। सारा जब चार्ज जोड़ेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ पे कोई चार्ज मटेरियल नहीं दे रहे, सो इट इज न्यूट्रल। कभी भी हम कोई भी तुमसे पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है निगेटिवली चार्ज होता है, तो बहुत बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पी टाइप मतलब होल्स, होल्स आर पॉजिटिव तो पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे मेजॉरिटी में है होल्स, बट दिस इज नॉट एन पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज न्यूट्रल। चाहे पी टाइप हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, सब न्यूट्रल होता है। तो कितने चार्जेस जैसे बोल सकते, जैसे बोले इन सेमीकंडक्टर कॉमनली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, होल्स और जो एटम्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो दीज आर आयनाइज्ड एक्सेप्टर और आयनाइज्ड डोनर। बट ओवरऑल जब हम सारा कुछ ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जैसे ये इक्वेशन दिखा है। तो ये हम लोग बाद में थोड़ा और आगे समझेंगे। अब ये चीज थोड़ा हम समझते हैं कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है कैरियर पे। कैरियर पे जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है। एक तो चीज हम लोग, तुमको याद होगा हम लोगों ने बात किया था कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको हम लोगों ने ऐसे समझा कि when you increase temperature means you give some energy, so more electron from valence band jump to the conduction band and because of which more charge carriers are produced। charge carriers ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट if not the most important parameter in semiconductor। तो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंट्रोल कर सकते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर in semiconductor because we can control conductivity of material। conductivity के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये बोले टेम्परेचर, देखो अभी जैसे इन्होंने लिखा है टेम्परेचर, डिक्शनरी विल टेल द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइज्ड scale। You should be accustomed to the Celsius scale by now, and it was stabilized with reference values to the freezing and boiling point of water। We typically talk about absolute scale in degree Kelvin। तो ये जो चीज बता रहे हैं ये हम लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज समझने वाला है कि कई बार ऐसे होता है कुछ न्यूमेरिकल तुमको पूछे जाएंगे, वहां पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम केल्विन टेम्परेचर यूज करते हैं, और केल्विन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इसमें डिफरेंस यही है, जैसे बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री केल्विन है,
और भी कई फारेनहाइट होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो केल्विन एक स्टैंडर्ड है, जनरली हम लोग यही टेम्परेचर यूज करते हैं। और ये सेल्सियस और केल्विन में 273 का डिफरेंस होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं होता है। तो इसको याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करके ही रखेंगे। नाउ व्हाई इज टेम्परेचर इंपॉर्टेंट? द एवरेज एनर्जी ऑफ a solid and its components, atoms, electrons, etc., is measured by its temperature. Temperature is kind of energy. The higher the temperature, more thermal energy is available to be used by the atoms and electrons. Since we are talking about electronic devices, the temperature has a significant impact on the behavior of electrons. Temperature must have a significant impact on behavior of electronic devices. तो क्योंकि टेम्परेचर बेसिकली क्या है, थर्मल एनर्जी है। अगर हम थर्मल एनर्जी देंगे तो उसका मूवमेंट बढ़ेगा चार्ज का, और चार्ज का मूवमेंट बढ़ेगा तो हम लोग करंट, उसकी कंडक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स डिपेंडेंट बाय टेम्परेचर। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर किस किस चीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो एक तो कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैरियर ज्यादा हो जाएंगे, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर ये बोले फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर का कंसंट्रेशन। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एनर्जी स्टेट्स कौन ऑक्यूपाइड है, कौन नहीं ऑक्यूपाइड है। और जब कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नए कैरियर जनरेट होंगे, तो जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होगा। बैंड गैप पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, ये भी हम लोग बात करेंगे। इनडायरेक्टली ये थोड़ा सा बहुत डायरेक्ट रिलेशन ऐसे नहीं कि कोई सेमीकंडक्टर है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका बैंड गैप कट बढ़ जाएगा, लेकिन बैंड गैप पे क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग इसकी बात करेंगे। डोनर एंड एक्सेप्टर आयनाइजेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, तो ये सब दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स टेम्परेचर, अफेक्ट्स देम डायरेक्टली। फिर एक चीज देखो, एक ये इक्वेशन लिखा है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ये तुम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा अगर, तो उसमें एनर्जी आता है, टेम्परेचर जितना देंगे तो कितना एनर्जी होगा। तो दिस इज जो उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी टेम्परेचर से दे रहे हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, मतलब उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो average kinetic energy of an electron in solid is linearly proportional to the temperature of any solid। मतलब ये kinetic energy है, this is temperature, तो temperature बढ़ाएंगे तो kinetic energy बढ़ेगी, this is the linear relation। So for room temperature we find that average velocity of an electron is approximately 10 to the power 7 centimeter per second। ये कैलकुलेशन किया। So अब हम लोग अगर सोचें, इतना सब कुछ बात करने के बाद हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कैरियर, जो चार्ज कैरियर्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और इनका बिहेवियर सेमीकंडक्टर में कैसे इम्पोर्टेंट है। सो यू सी, लेट्स रीड दिस that we have how carrier behave under equilibrium condition। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक का मतलब एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ये है जब सिस्टम में कुछ यूनिफॉर्मिटी होती है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इक्विलिब्रियम के बाद में कभी डिस्कस करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट इज चेंज। दिस चेंज कैन कम इन फॉर्म ऑफ externally applied forces like electric field, change in temperature, or change in degree of doping। ठीक है, तो बोले कि these are the factors। हम लोग जितने फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक तो है कि कुछ बाहर से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके मोशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, या हम टेम्परेचर चेंज कर दें, या हम डोपिंग को कम ज्यादा कर दें। डोपिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट समझने का कोशिश करेंगे कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन क्या है।
चार्ज कैरियर के केस में, और कॉम्बिनेशन और जनरेशन क्या है. So these are three major processes. If we understand, then we can understand कि क्या हो रहा है सारे devices में. जो भी devices हम लोग देखते हैं semiconductor devices, so we will have an idea about it. So these are the basic things happening anywhere. So drift and diffusion current make up to total current density in the semiconductor. ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दो अलग अलग प्रोसेस हैं चार्ज कैरियर के ट्रांसपोर्ट की. तो चार्ज कैरियर जब मोशन करेगा तभी करंट बनेगी, और वहीं उससे हम कंडक्टिविटी मेजर करेंगे. ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं. ये बोल रहा है कि ड्रिफ्ट का करंट, कुछ ड्रिफ्ट की वजह से करंट, कुछ डिफ्यूजन की वजह से करंट, वो दोनों मिला के एक टोटल करंट डेंसिटी मिलेगा सेमीकंडक्टर में. These are not necessarily always present. ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों होना ही चाहिए. कभी हो सकता है ड्रिफ्ट डोमिनेट करे, कभी हो सकता है डिफ्यूजन डोमिनेट करे, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग सिचुएशन. तो हम लोग ड्रिफ्ट डिफ्यूजन को भी समझेंगे आगे चल के. Processes that are always present in a semiconductor to stabilize it and return it to the equilibrium condition are recombination and generation. तो दो प्रोसेस देखो, हम लोग को चार चीजों का कंसेप्ट समझना है. ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन. इक्विलिब्रियम इसी के बीच में हमको समझना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कैसे आएगा. So here electrons and holes are destroyed is there if there is an excess of carrier or general if there is a diffusion. Carrier generation और combination की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब ड्रिफ्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग. एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चीजों को समझ लें, देन वी विल डू सम डेरिवेशंस, देन वी विल डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ऐसे हम तो ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट बाय डेफिनेशन चार्ज पार्टिकल मोशन इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, उसी हिसाब से चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे. ये नॉर्मल सबको ही पता है. 10+2 में इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रिज्म का जो यूनिट है वहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, सब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ. तो ड्रिफ्ट क्या है? बेसिकली चार्ज पार्टिकल का मोशन इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. When an electric field applied across a semiconductor, the carrier starts moving, producing a current. ये हम लोगों ने अभी बात की कि जब कोई भी चार्ज कैरियर मूव करेगा तभी वो करंट प्रोड्यूस करेगा. तो पॉजिटिवली चार्ज hole move with an electric field, where a negatively charged electron move against the electric field. Electric field, if you remember, कि जो होल होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेreas इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. हम लोगों ने ये पहले से भी बात किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और इनका जो चार्ज है वो एक दूसरे के उल्टा है. तो इनका करंट में मोशन भी एक दूसरे से उल्टा होगा, एक तरफ जाएगी, दूसरा दूसरी तरफ जाएगी. So motion of each carrier can be described as a constant drift velocity. जिस वेलोसिटी से ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे, जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कोई चार्ज कैरियर उसमें मूव कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. ड्रिफ्ट हमने डिफाइन किया. ड्रिफ्ट क्या है कि जब कोई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में की वजह से चार्ज पोर्ट पार्टिकल मूव करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिफ्ट. और चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दिस कांस्टेंट takes into consideration the collision and setback each carrier while moving from one place to another. अब इसको समझना है कि बहुत सारे चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा कि ये आपस में टकराएंगे. तो टकरा जैसे कोई बहुत सारे पार्टिकल की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक टकराएगा, फिर वो सेटबैक हुआ, पीछे जाएगा, फिर से टकराएगा, फिर चलेगा. सो वी हैव टू कंसीडर द कोलिजन. ये क्या है इसको भी हमको मतलब कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर एक ही पार्टिकल जा रहा होता है
तो वो किसी से टकराएगा नहीं. There are many particles moving, holes are moving in one direction, or electrons are moving in one direction, so they will collide. ऐसे हम लोग समझें इसको. तो इसको भी हमको जब ड्रिफ्ट समझ रहे हैं तो ड्रिफ्ट की प्रोसेस में इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. सो अब इस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बोल रहे हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? The constant, it is considered a constant though because the carriers will eventually go to the direction they are supposed to regardless of any setback. इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो वो जाएंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, कितना भी एक दूसरे से टकराएं, बट दे विल मूव समहाउ. सो यू कैन, आई विल शो यू सम एनिमेशन समडे कि कैसे कोलिजन होते भी वो एक ही तरफ बढ़ते जाएंगे, कि इधर इधर फील्ड लगा है उस डायरेक्शन में वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. तो वेलोसिटी यू कैन थिंक दिस इज एन कांस्टेंट वेलोसिटी. तो एक को देखने के बजाय ऐसे बोले कि ये अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ ऑल कैरियर्स देखेंगे तो यू विल गेट एन नंबर. तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब सोचो, ड्रिफ्ट का कांसेप्ट हम समझ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा. तो ये हो गया ड्रिफ्ट करंट. Drift current in a semiconductor is the resultant of carrier drift. ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट जो फिनोमेना है इसकी वजह से क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा. Because we are talking about semiconductor, specific area in semiconductor, तो हम लोग बेसिकली जानना चाहते हैं टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा. हम लोग तो मेजर करने के लिए तो एक एक को मेजर नहीं करने जाएंगे. हम लोग को क्या करना होगा कि ओवरऑल करंट मिलेगा. अब हम उसकी प्रोसेस समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल है ये करंट के लिए. तो एक प्रोसेस हम लोग समझ रहे हैं ड्रिफ्ट. तो एक तो आ गया ड्रिफ्ट करंट. सो व्हाइल डीलिंग विद ड्रिफ्ट करंट we are interested in the current density due to drift, and drift arises in response of electric field. Drift current also depend on the availability of the carriers to move around in semiconductor or electrons and hole mobility. So another parameter drift current depend on the carrier concentration. कितने सारे carriers हैं, ज़्यादा carrier होंगे तो ज़्यादा टकराएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, उनकी drift velocity कम हो जाएगी तो drift current कम हो जाएगी. मतलब कैरियर कंसंट्रेशन पे ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो डिपेंड करता है. So finally we have a current density due to drift dependent on 4 पैरामीटर. तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाया है उस पे डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या इस पे डिपेंड करेगा. मोबिलिटी कांस्टेंट मतलब उसका एक इफेक्टिव मास, जैसे मोबिलिटी मतलब कैसे मूव कर रहा है, कितना, वो एक कांस्टेंट है, वो कैसे आया उसकी बात करेंगे सामने. एंड देन द चार्ज कितना है कैरियर पे. ये दीज आर द 4 फैक्टर विच विल अफेक्ट ड्रिफ्ट करंट. तो हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं. तो प्लस क्यू फॉर होल माइनस क्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ वी टेक